this day 15 of our 31-day GST refresher course, wherein we are intending to discuss the CGST as well as IGST Act, and cover all the sections, read line by line, and try to analyze and interpret the provisions. And then after this series, we have the planning to have the series on rules also. That also certainly we are going to do. And along with this, we are already doing the circular series. We had said that we will be recording at least 2 series and uploading it on a daily basis, but due to some reasons, this could not be done. But at least we are making sure that at least one video we are recording on a daily basis so that you can understand it. And plus, we are trying that the videos of circulars are in detail, wherein we are reading the circulars and then trying to analyze it so that it makes some sense to the participants. Now, friends, we already had announced this series of case laws. So by the end of today's session, you will be having the uh, declaration of the same. It is before your screen also, and I'll be discussing about this series, at the end of this particular session. So this is case law analysis, wherein we have certain planning, some things to be covered. That entire thing I'll be I would like to cover after the this session. So let me first start with the session of the day. Today, friends, we are going to cover chapter number 15, which deals with demand and recovery. And as per me, this once again is very, very crucial chapter and very, very crucial, I would say, subject to understand. Because, friends, as I've already said, I am a strong believer of a fact that even 1 rupee have to be demanded. Even the 1 rupee needs to be demanded or is supposed to be demanded for short payment, not payment, or by any other reason by the departmental officer. He cannot demand that without issuance of a show cause notice. Show cause notice is mandatory to be issued. It is mandatory to be issued in case the departmental officer or the department or the government is of the belief that there is some non-payment or some short payment of tax. I do agree that there are certain exceptions also to this. In few cases, the show cause notice issuance is not mandatory. We'll be touching upon all those issues today. And this chapter runs from section 73. It covers section 73 to section 84. It's a long chapter. We'll try to cover as much as possible. कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे. We'll try to read the entire provision. We'll try to analyze. We'll try to understand, because this is very important. See, I've said earlier also, again, once again, I'm reiterating the same, that our responsibility ends when we file the return. And then the role of department starts. But at the same time, we have to know, or we need to know, all the provisions which are pertaining or which are empowering the authorities to issue show cause notice, to initiate the recovery proceedings, to initiate the power of provisional attachment, to initiate the power of arrest or search or inspection. We need to be very clear that what powers or whatever powers they are imposing on us or they are using are within the four corners or within the authority of law. And for the same, I would say that we need to be very vigilant about those provisions in which we may not be responsible to the larger extent, because that is not mere compliance के ऊपर चला गया, आपने फाइल कर दिया, उसके बाद कि वो एक्शन है स्क्रूटनी के या सर्च के या इंस्पेक्शन के या ऑडिट के, all those actions are there wherein the departmental officer is empowered to do that. But you need to keep a track, you need to keep a very close eye on all the provisions of the law pertaining to those sections wherein the departmental officer is getting empowerment in the statute. क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे हम पावर देते हैं वहाँ पे वो पावर या तो यूज ठीक तरीके से होती है या फिर वो मिसयूज होती है. So we need to understand what is written in the law, when this can be done, if the action has been taken by the officer, whether that action is
within the authority of law or not. And for that, these sections becomes very important. So friends, we'll start with section 73 first. Subsection 1 says where it appears to the proper officer. Now proper officer has already been defined in the law. जहाँ कमिश्नर है या फिर वो किसी को ऑथराइज करता है वो ऑफिसर है. The proper, where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of fraud or willful misstatement or suppression of facts to evade the payment of tax. He shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid, or which has been so short paid, or to whom the input tax credit to whom the refund has been erroneously been made, or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice, along with the interest payable thereon, under section 50, and a penalty leviable under the provisions of this act or the rules made thereunder. Now friends, अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रोविजन हो गया. ये एम्पावर करता है ऑफिसर को, जहां पे भी प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई टैक्स है जो शॉर्ट पेमेंट हुआ है या नॉन पेमेंट है, पेमेंट ही नहीं हुआ, या गलती से उसको आपने रिफंड कर दिया, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने अवेल कर लिया wrongly or utilize. Availed or utilize, these two words are very important. We'll discuss these words at the time of discussion of a particular case law wherein it has been analyzed and guidelines are issued or the directions are issued very particularly. बहुत अच्छी तरीके से उस केस लॉ में है, तो we'll try to cover that and try to understand. So it says credit has been wrongly availed or utilized. It is not wrongly availed and utilized. Can it be what I can say interpreted in a manner that it has to be wrongly availed, not only availed but also utilized for the purpose of recovery, other than the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax. Meaning thereby short payment हो, non payment हो, erroneous refund हो, या गलत input tax credit अवेल या यूटिलाइज कर लिया हो, लेकिन वहां पे कोई फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन नहीं हो, तब सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 में प्रॉपर ऑफिसर will issue the notice to the person who is taxable or chargeable with tax under this act, that why the tax which is short paid, or the why the tax which is not paid, or why the amount which has been wrongly refunded to you, or why the input tax credit that you have wrongly availed or utilized shall not be demanded back. तो उसको शोकोस करने के लिए वो एक नोटिस भेजेगा उसको, और ही विल आस्क कि क्यों ये पैसा आपसे नहीं लिया जाए और क्यों इंटरेस्ट और पेनल्टी आपके ऊपर लेवी ना की जाए. तो दैट इज सबसेक्शन 1. सो फ्रेंड्स, अगेन आई वुड रीइटरेट, प्लीज कीप इन माइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि अगर डिपार्टमेंट को आपसे 1 रुपया भी कलेक्शन करना हो तो ही विल हैव टू इशू अ शोकॉज नोटिस. मीनिंग देयर बाई एक थंब रूल. दूसरा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एनी इंफॉर्मेशन, any document or any evidence which is leading to a belief of the officer that yes, there is some short payment of tax. I'm not saying intentionally short payment किया या unintentionally short payment हो गया, but it leads to the belief, कोई भी ऐसा document या evidence, it leads to be belief that there is short payment of tax, or any document which enforces the tax officer to take a decision against you, against the taxpayer. So he will have to issue a show cause notice. Without the issuance of show cause notice, without giving the opportunity of being heard, he cannot initiate the proceeding. That is what precisely I would mean. Subsection 2, it says the proper officer shall issue the notice under subsection 1 at least 3 months prior to the time limit specified in subsection 10 for issuance of the order. Now, friends, this is a beautiful provision, I would say. See, in earlier regime, in excise and service tax, there were provisions for issuance of show cause notice. Section 73 of the Finance Act was providing for the issuance of show cause notice within 30 months or 5 years in case of extended period. But friends, please appreciate that was the time limit only for the issuance of show cause notice. The time limit was only for the issuance of show cause notice,
there was no time limit specified in the law for the adjudication of that show cause notice. होता ये था कि शो कॉज नोटिस तो टाइम लिमिट में लास्ट डे पे भागते भागते किसी तरीके से आपके ऊपर सर्व कर दिया जाता था, या ऑफिसर आपको बुलाता था या भागा भागा आपके घर आता था और वो सर्व कर देता था। उसके बाद उसका एडजुडिकेशन साल 2 साल 5 साल तक भी चलता रहता था, एडजुडिकेशन नहीं होता था, बिकॉज देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस, कमिश्नर नहीं है, उसकी ट्रांसफर हो गई है, पोजीशन नहीं है, whatever, there can be different things or different reasons for that, but the adjudication was taking time. There was not time limit. Although in the law it was specified it needs to be adjudicated within this period, but वहाँ पे कॉमा लगा के लिखा होता था wherever it is possible to do so. तो आई वुड से कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लिवरेज दिया जाएगा कि आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस आई विल से कि यार देखेंगे लास्ट में करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में करेंगे। ये एक टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी, साइकोलॉजी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जो पर्टिकुलर होते हैं, वेरी डिसिप्लिन, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इनडिसिप्लिन एंड दे टेक इट इन अ वे कि ठीक है जब होगा तब करेंगे, अभी कोई मैंडेट नहीं है। सो द एडजुडिकेशन वाज गेटिंग डिले एंड बिकॉज ऑफ दैट द इम्प्लीकेशन वाज कि आपको टैक्स भरने को आता था, उसके ऊपर इंटरेस्ट का मीटर आपका चालू था, प्लस पेनल्टी आपके ऊपर आती थी। सो ऑल दोज स्टेप्स वर, I would say, were not in favor of the taxpayer. Now that mistake has been rectified in this law, and they have said they have given a time limit for adjudication of the matter, कि आपको इतने समय में इस मैटर को एडजुडिकेट करना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 में वही लिखा है। सब सेक्शन 10 में जो टाइम लिमिट है ऑर्डर इशू करने की, उससे कम से कम 3 महीने पहले आपको शो कोज आ जाना चाहिए। आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, now there is a time limit specified in the law in section 73 and section 74, which specify that this is the maximum time limit. Within this time limit, you will have to issue the order pertaining to this particular financial year. And in case you fail to issue the order within this time limit for a particular financial year, then the matter will be time barred and you will not be in a position to collect that amount. So ये ब्यूटीफुल पोजीशन है कि अब मुझे पता चलता है कि मेरा 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर ऑर्डर आना है। पहले ये था कि 3 साल या 5 साल में तो मेरे पास शो कोज आता था, उसके बाद उसका एडजुडिकेशन चलता था साल 2 साल 5 साल तक। तो मेरा इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितना होता था? आज 18% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट है या 24% के हिसाब से इंटरेस्ट है, उस समय सर्विस टैक्स में तो 24% 30% तक गया था। 18% के हिसाब से भी आप लेंगे तो 5 साल में आपका वो डबल हो जाता है पैसा। तो अगर ये एडजुडिकेशन 5 साल और चले पुराने हिसाब से, तो 10 साल में तो आदमी का 100 रुपए के लेवी पे 200 रुपए की इंटरेस्ट देनी आ जाती है। So the person can be safeguarded out of that, and therefore this provision is good provision as per me। ये जो शो कॉज नोटिस सबसेक्शन 1 में बात किया, ये 3 महीने पहले आपको आ जाना चाहिए था of the limit which is specified under subsection 10 of section 73। Moving further, subsection 3 ये बोलता है जहां आपका सबसेक्शन 1 में कोई नोटिस इशू हो गया and then the proper officer ascertains that or determines that कि in later period also या in some other period also the same facts were there and the short payment or non-payment or erroneous refund or the ITC wrongly availed or utilized position was there, तो उसके लिए फिर उसको डिटेल्ड शोकोज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। He is not supposed to issue a detailed showcause notice. He can issue even a statement. He can issue even a statement which will be valid in law. You cannot argue that since it is not in the shape of showcause notice, it is not mentioning the entire facts, mentioning the entire things in the notice, this will be bad in law. So law per se has given this thing कि अगर आपने 18-19 का असेसमेंट किया, सेम फैक्ट्स पे दूसरे पीरियड में भी अगर आपका असेसमेंट करना था या एडजुडिकेशन के लिए नोटिस भेजना था, लेट्स से 19-20 का, तो फिर आपको दोबारा से शोकॉज नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टेटमेंट भेजोगे, दैट स्टेटमेंट पर से विल बिकम द शोकॉज नोटिस। इट विल टेक द कलर and shape of showcause notice and it will be adjudicated as if the showcause notice is being adjudicated. So let me read subsection 3 also. It says where a notice has been issued for any period under subsection 1, the proper officer may serve a statement containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for such periods other than those covered in subsection 1 on the person chargeable with tax. Now please bear in mind friends कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो facts and circumstances हैं, जो grounds of belief है, that has to be the same as it was in case of show cause notice.
what I mean to say is, in case the principal argument or principal reason of issuing the show cause notice was, let's say, x, कि उसने ट्यूशन फीस कलेक्ट की लेकिन उसके ऊपर पे नहीं किया, लेट्स से वो था, और दूसरे पीरियड में शो कॉज नोटिस में एलिगेशन ये था कि उसने स्कूल चालू किया और स्कूल में वो फूड प्रोवाइड करता था, उस पर टैक्स नहीं भरा, देन दीज टू फैक्ट्स आर डिफरेंट, द नॉलेज or rather the reason to believe is absolutely different and the grounds are absolutely different, and therefore उस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया ट्यूशन फीस का और फूड सप्लाई इन स्कूल, ये दोनों अलग सिचुएशंस हो जाएंगे और दोनों में दो अलग शोकोज नोटिस सबसेक्शन 1 में इशू होंगे। लेकिन अगर 18-19 की फीस का उसने शोकोज नोटिस दिया और 19-20 में भी उसको लगता है वही फीस की शॉर्ट पेमेंट है, तो 19-20 के लिए उसको जो शोकोज नोटिस नहीं देने की जरूरत है वो स्टेटमेंट इशू कर सकता है। दैट इज व्हाट इज सबसेक्शन 3 एंड दिस इज व्हाट इज रेफर्ड इन सबसेक्शन 4। लेट अस रीड सबसेक्शन 4। The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under aforesaid section subsection 1. So this we have already clarified. The statement will take the color and shape of the show cause notice issued under subsection 1 by the authorities, subject to the conditions that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered in subsection 1 are same as are mentioned in the earlier notice. Same, I believe you all are clear now कि अगर उसमें grounds change हो जाते हैं, then the statement will not suffice. You will have to issue a separate complete show cause notice. But in case the grounds are absolutely same, then you can issue the additional statement and demand the tax. Subsection 5. The person chargeable with tax before service of notice under subsection 1, or as the case may be, the statement under subsection 3, pay the amount of tax along with interest payable thereon under section 50 on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer, and inform the proper officer in writing of such payment. So this is गिविंग अ रिलीफ टू द टैक्स पेयर कि भाई अगर आपको लगता है कि आपसे कोई शॉर्ट पेमेंट हो गया था, भले ही अपने आप लगता है खुद की असरटेनमेंट पे या डिपार्टमेंट आपको बताता है तो आपको लगता है, तो आप जो टैक्स आपने शॉर्ट पेमेंट किया या नहीं पेमेंट किया या आपने गलत रिफंड ले लिया या अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल या यूटिलाइज कर लिया, उसको आप अलॉन्ग विद टैक्स अंडर सेक्शन 50 आप भर दीजिए और प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दीजिए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट एंड द इंटीमेशन फॉर्म इज DRC 03 which needs to be filed. So therefore subsection 5 gives the person who is chargeable with tax under this law and who has not paid the tax correctly or has wrongly availed input tax credit or utilized input tax credit or has taken some refund which is bad in law. So what he can do is he can come forward, make the payment of such tax along with the interest under section 50, either on his own ascertainment or on the ascertainment by the proper officer, and inform the proper officer in writing of such payment. Now please note friends, ऑडिट जब डिपार्टमेंट करता है या लेट से वो सर्च करने के लिए आपके पास आता है या इंस्पेक्शन करने के लिए आता है और वहां पे वो आइडेंटिफाई करता है कि आपने इतना पेमेंट नहीं किया, फॉरगेट अबाउट द रीजन ऑफ सेक्शन 67 के वो इंस्पेक्शन और सर्च के लिए आता है। एक नॉर्मल केस में मैं मानता हूँ ऑडिट करने आता है सेक्शन 65 में और वो बताता है कि साहब आपने ये जो पेमेंट्स थी ये आपने पेमेंट्स आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की। देयर कैन बी टू वेज और टू एक्शन पॉइंट्स फॉर यू। वन, either to agree on what he is saying and pay the tax, or agree to pay the tax I would say, or to defend that the tax was not liable. अगर tax was not liable if you are defending in that fashion तब तो चैप्टर खत्म हो गया, तब तो पेमेंट नहीं आता। लेकिन अगर आप अग्री करते हो कि पेमेंट करना है तो इवन आफ्टर द असर्टेनमेंट बाय द प्रॉपर ऑफिसर यू कैन मेक द पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड यू कैन बी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 5। बट आप देखेंगे मेजॉरिटी केसेस में डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि ये तो आपने सप्रेस किया था, आपने मिस रिप्रेजेंट किया था, आप इसको चोरी करना चाहते थे, इवेट करना चाहते थे, हमने बता दिया तो आप भर रहे हैं, एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी गिवन द रिलीफ अंडर दिस सबसेक्शन एंड यू विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 74। 74 क्या है वो हम देखेंगे, बट वो आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो प्लीज बेयर इन माइंड फ्रेंड्स,
यहाँ पे भी जो ओपनिंग रिमार्क्स आपने सबसेक्शन 1 में पढ़े थे वहां पे भी वर्ड लिखा है टू इवेट टैक्स, टू इवेट टैक्स, बट देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। सो प्लीज बेयर इन माइंड कि उस केस में भी भले ही डिपार्टमेंट आपको बताता है, उसके बाद भी अगर आप पे करते हैं एंड देयर इज नो फ्रॉड, सप्रेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्वड इन द मैटर, you can get the relief or benefit under subsection 5 once you make the payment along with interest. Subsection 6, friends, it says the proper officer on receipt of such information, the proper officer on receipt of such information, that is what information you are giving under subsection 5, shall not serve any notice under subsection 1, or as the case may be, the statement under subsection 3 in respect of the tax so paid or penalty leviable under the provisions of this act or rules made thereunder. एक बार आप प्रॉपर ऑफिसर को बता देते हैं जो इंटीमेशन की बात पहले सबसेक्शन 5 में की थी, once you intimate then he shall not issue or he shall not serve any show cause notice under subsection 1 or statement under subsection 3 in respect of the tax so paid. तो जो आपने टैक्स भर दिया उससे पर्टेनिंग वो शो कॉज नोटिस इशू नहीं करेगा। बट सब सेक्शन 7 बोलता है कि अगर उसको डाउट है तो जो सब सेक्शन 5 में आपने भरा वो स्टिल इट इज अ शॉर्ट पेमेंट, डिपार्टमेंट के हिसाब से 1 लाख भरना चाहिए था और आपने 80,000 रुपए भरा है, स्टिल देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज, देन टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 20,000 रुपीज ही कैन इशू अ शो कॉज नोटिस व्हिच इज अलाउड अंडर सबसेक्शन 7. It says where the proper officer is of the opinion that amount paid under subsection 5 falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in subsection 1 in respect of such amount which falls short of the amount actually payable. तो 1 लाख एक्चुअली पेबल था, 80,000 रुपए आपने भरे, तो जो 20,000 रुपए की अमाउंट थी उस अमाउंट का आप शोकॉज नोटिस इशू कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 7. Moving to subsection 8, friends, it says where any person chargeable with tax under subsection 1 or under subsection 3 pays the tax along with interest payable under section 50 within 30 days of the issuance of show cause notice. जो subsection 7 में या subsection 1 में या subsection 3 में जो भी show cause notice आपको मिल रहा है उसके 30 days के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं then in that case no penalty shall be payable, no penalty shall be payable, and all the proceedings in respect of the said tax shall be deemed to be concluded. So in that case there will not be any leviability of penalty and you will be the matter will be concluded. So friends, please bear in mind, एक बार आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं along with interest even within 30 days of the issuance of show cause notice, then also section 73 allows you not to make any payment of penalty. तो आपको कोई penalty नहीं लगेगी and the matter will be concluded. Subsection 9, friends, it says the proper officer shall after considering the representation, now this is the important section क्योंकि यहाँ पे वो order की बात करेगा 9 और 10 में. After considering the representation if any made by person chargeable with tax, made by person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and the penalty not exceeding 10% of tax or 10,000 rupees whichever is higher due from such person and issue an order. तो प्रॉपर ऑफिसर आपके सारे जो रिप्लाईज रहेंगे शोकॉज नोटिस के, आपके जो भी डिफेंस पॉइंट्स रहेंगे वो सब चीजों को कंसिडरेशन करेगा, कंसिडर करेगा, रिप्रेजेंटेशन में आपने जो दिया उन सबको कंसिडर करेगा और उसके बाद वो डिटरमाइन करेगा कि कितना टैक्स पेबल है, कितना इंटरेस्ट उस पर लगेगा और पेनल्टी मैक्सिमम 10% लगा सकता है अंडर सेक्शन 73(9), मैक्सिमम 10% पेनल्टी वो लगाएगा और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड इशू एन ऑर्डर. So that is subsection 9. Subsection 10 says the proper officer shall, तो आपको ध्यान होगा subsection 2 में it was written कि it has to be, the show cause notice has to be issued at least 3 months prior to the time specified under subsection 10. Now this is subsection 10. The proper officer shall issue the order under subsection 9 within 3 years from the due date of furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilized relates, or as the case may be within 3 years from the date of erroneous refund. तो 3 साल के अंदर अंदर. Now please read it. It says from the due date of furnishing of annual return. So this is the point which needs to be kept in mind, that whenever the due date of annual return is getting extended by the department, it is always beneficial to the department, because अगर आपका ड्यू डेट 2 साल आगे बढ़ जाए
तो इनका जो टाइम बारिंग है सेक्शन 73 में वो भी 2 साल आगे बढ़ जाएगा. So it is always beneficial for them. The time limit which is provided in this law is 3 years from the due date of filing of annual return. This is not actual date of filing of annual return. It is due date of filing of annual return, and where the erroneous refund was the case, then the date of payment within 3 years from the date of erroneous refund. You can order. Subsection 11, notwithstanding anything contained in subsection 6 or subsection 8. Now this is very important. बहुत सारे लोगों ने इसमें मिसरीड किया है, इसको मिस इंटरप्रेट किया है. तो मैं आपको कॉशन दे रहा हूँ, यू विल हैव टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग this particular subsection, because this subsection generally is not read boldly and clearly by the readers. So notwithstanding anything contained in subsection 6 or subsection 8. subsection 6 क्या था फ्रेंड्स? subsection 6 था जहाँ पे उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो इंटीमेशन मिल जाए, उसके बाद वो शो कॉज नोटिस नहीं देगा. सबसेक्शन 8 क्या था? जहाँ पे वो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो भी उसको मैटर को कंक्लूड कर देना पड़ेगा. तो नाउ दिस सबसेक्शन 11 इज overriding subsection 6 or subsection 8, and it is saying penalty under subsection 9 shall be payable where in any amount of self-assessed tax or any amount collected at tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of tax. Please bear in mind, friends, it is within the period of 30 days from the due date of payment of tax. It is not within 30 days from the date of order under section 73 subsection 9. प्लीज बेयर इन माइंड, जनरली हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर भी पेमेंट कर देंगे तो भी हमें पेनल्टी नहीं लगेगी. पेनल्टी नहीं लगेगी सबसेक्शन में या सेक्शन 73 में केवल तभी जब आप शोकोज आने के 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दें. शोकोज आने के 30 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते और वो मैटर एडजुडिकेट हो जाता है, और एडजुडिकेशन होने की वजह से सेल्फ असेस टैक्स है, यानी आपने रिटर्न में दिखा रखा है और नहीं करा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप रिटर्न ही नहीं भर सकते हो. द जीएसटीएन विल नॉट अलाउ यू टू फाइल द रिटर्न वेयर इन द लाइबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग. तो वो तो चैप्टर ही खत्म हो गया. तो इससे ही पता चलता है कि जीएसटीएन इज ओवरराइडिंग द लॉ. वो कर ही नहीं सकता. लॉ हैव नो रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैनॉट पे, यू कैनॉट फाइल द रिटर्न विद द टैक्स पेबल. लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है? एनी अमाउंट विच इज कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड. तो कोई अमाउंट अगर आपने कलेक्ट कर लिया है टैक्स का और उसको पे नहीं किया 30 दिन के अंदर, ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर, मीनिंग देयर बाय लेट्स से मार्च 2017 का था, या सॉरी 2018 का था, जो आपको 20 अप्रैल तक भरना था. 20 अप्रैल से 30 दिन के अंदर भी अगर आपने वो नहीं भरा तो आपके ऊपर 10 जो पेनल्टी है वो लगेगी. then the penalty of 10% will be applicable to you. It is not, please bear in mind, I am reiterating it, it is not within 30 days from the date of order. It is within 30 days from the date of payment of tax, meaning thereby original due date. Original due date अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, भले ही उसमें फ्रॉड नहीं था, सप्रेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपने कलेक्ट कर लिया, शोकोज नोटिस भी आ गया, उसके भी 30 दिन के अंदर आपने नहीं भरा, मैटर को एडजुडिकेट करा लिया, या 30 दिन खत्म हो गया उसके बाद आप भरने आए, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपको 10% पेनल्टी भरनी पड़ेगी. 10% और 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, यू विल हैव टू पे दैट. प्लीज कीप दिस इन माइंड. दिस सेक्शन इज, सबसेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली वी हैव मिसरेड इट क्योंकि हमारे पास पास्ट प्रेसिडेंसेस है, और जब भी ऐसा रहता है कि हम पिछला पढ़ा हुआ होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब पिछला पढ़ा हुआ होता है और शुरुआत की कुछ लाइनें वैसे ही पढ़ते हैं, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वही लिखा होगा, और जनरली उसको उस नज़र से हम नहीं पढ़ते. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे बहुत क्लियरली उसने लिख दिया है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स. तो अगर ड्यू डेट के अंदर 30 दिन के अंदर अगर आपने नहीं भरा, ऑब्वियसली आपने नहीं भरा होगा तभी 73 आपके ऊपर चल रहा है, तो आपके ऊपर 10% पेनल्टी मिनिमम फिक्स हो गई है. 10% or 10,000 rupees, whichever is higher, is fixed on you, and you will have to pay that. Please bear in mind, subsection 11 of section 73 is not what we have read, it is something different. So please keep this in mind, and this is going to be a very crucial section for the departmental officers. Rules, notifications I'm skipping.
There are circulars, relevant orders, case laws. Let us touch few of the case laws. Just we'll have a fast glimpse of it and then we'll move ahead. क्योंकि 73 के अभी बहुत ज्यादा केसेस हुए ही नहीं है, नोटिस उतने आए नहीं है, 3 साल हुआ है, लेकिन जो अपना एनुअल रिटर्न है वो तो अभी गया है. It has gone on 31st January. That was the due date of annual return, and therefore वो अभी तक गए नहीं है कोई भी. शोकॉज नोटिस बहुत ज्यादा इशू हुए ही नहीं है. सेक्शन 73 पहला, अली असगर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का. 235 ऑफ 2019 इज द रिट नंबर. 235 ऑफ 2019. इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि 73(9) में ऑर्डर आ गया, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, उसका ऑर्डर आ गया 73(9) में. अब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में या जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में बंदे ने डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और हाई कोर्ट ने कह दिया कि सिंस द अल्टरनेट मैकेनिज्म इज देयर, you can proceed for appellate mechanism and the right of appeal is already provided in the law under section 107. We do not want to interfere in the order, and therefore you are required to approach the alternate remedy authorities and approach the commissioner appeals or the appellate authority as per the provisions of section 107. Now friends, last time also I have shared this. मेरे ख्याल से जब सर्च का हमने डिस्कशन किया था तब भी सर्च किया था मैं, अभी या असेसमेंट के समय में किया था, और मैं वापस कर रहा हूँ कि at times where the show cause notice is issued and we try to proceed against that show cause notice directly in the high court, there are situations wherein the high court do not want to interfere in all those things. वो interfere नहीं करना पसंद करेगा और वो ये बोलेगा कि आपके पास मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप जाके एडजुडिकेशन कराइए, उसके बाद अपील का मैकेनिज्म है, फिर भी अगर वो सेटल नहीं होता, and if the question of law is involved, then you can come back to us as an appellate power. Within the appellate power will do that. So please bear in mind, the writ petition can be filed. The writ petition has no restriction as such, but the courts have taken a view that in cases where the alternate remedy is there, we are not going to interfere, and the alternate remedy needs to be exhausted first. That option or the view or the power or the right by the taxpayer has to be exercised and exhausted first. और वो exhaust हो जाता है, उसके बाद you can come to us anytime as appeals, like in appellate forum or in writ. So that is what I would like to reiterate once. Next है नौकार इस्पात प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स कि डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्च पे आया था और 10,14,000 रुपए का कलेक्शन करके कि आपने आईटीसी ठीक से नहीं लिया या आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, दे हैव टेकन दैट 10,14,000 rupees without doing any assessment or without doing any adjudication, and therefore the honorable court, the honorable high court of Gujarat in case of Navkar Ispat have said कि आप प्लीज पहले असेसमेंट फ्रेम करिए विद इन द पीरियड ऑफ 3 months, और उनको इस बोला गया कि आप असेसमेंट को फ्रेम करिए. दैट वाज डायरेक्शन गिवन टू द रिस्पोंडेंट्स. So the special civil application number in this case is 11249 of 2019. 11249 of 2019. Next, Om Shiv Associates versus Union of India. In this matter, what has happened was the application was made by the person, by the petitioner who was a contractor, और इसके बाद section 73 of the Finance Act में आ गया notice, and a summon was also given to him under section 70 of the CGST law. So he challenged that summon and he wanted that the summon should not be sent to him, and the authorities shall decide the matter under section 73 of the Finance Act prior to issuance of summon. And in this case also the order was given in favor of revenue, wherein the court has clearly said कि जो petitioner है वो establish ही नहीं कर पाया कोई भी facts को, and therefore we are not inclined to entertain this petition. रेडिको खैतान लिमिटेड, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मैटर है. यहाँ पे भी 73(1) का नोटिस इशू हुआ कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फॉर डिटरमाइनिंग द जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. जो व्यक्ति जो था वो डील करता था अनडिनेचर्ड ईएनए की सप्लाई में जो यूज होता है लिकर के प्रोडक्शन में, एंड देयरफॉर द कोर्ट हैव सेड कि इस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है. Since on this product the GST per se is not applicable, so what is the point in issuing a show cause notice under section 73 subsection 1, and therefore it was the notice was quashed. This writ petition number is
1329 of 2019 by Honorable Allahabad High Court. Next is Systematic Conscom Limited, again Allahabad High Court, Honorable Allahabad High Court, same था 73(9) में इसको ऑर्डर आ गया and they have challenged the order, petitioner have challenged the order and the court have said कि नहीं, आपके पास alternate mechanism है, you have the appellate mechanism there, please go and exercise that option of appeals. Sirajuddin and Company, High Court of Odisha, writ petition number 386 of 2020, 386 of 2020. It says, assessee in this case have approached the Honorable High Court seeking the relief under section 73, wherein the order was issued by the competent authority for non-payment of GST without giving any opportunity. So in this case also, the matter was remanded back to the authority by the Honorable Court, and the authority was said that kindly hear the matter, kindly give the opportunity, proper opportunity, and then you pass the order as per the provisions of the law. Now, LC Infra Projects Private Limited, section 50 में भी I think we have discussed this, and again I am discussing this. LC Infrastructure में clear सा एक question था कि जो interest की demand कर रहे थे ये लोग gross पे, that the interest is leviable on gross, the hot matter which is now settled. I would say now also not settled, because till the date notification comes, we cannot say that it is settled. It is only a recommendation by the GST Council and the 39th GST Council. LC Infra projects में the allegation was the interest has to be paid on gross, and therefore the notice was issued, the letter was issued, और वो issue किया तो the petitioner has challenged this particular letter or particular notice issued under section 50, wherein they have said कि section 50 में कोई भी demand का power नहीं है, determination का power नहीं है. You need to exhaust or you need to invoke the power under section 73, issue the notice under section 73, and then once it is adjudicated against me, then only you can initiate the recovery of interest or the interest part. उसके पहले आप adjudicate नहीं कर सकते interest को. That was the allegation, that was the direction which was sought by the petitioner from the Honorable Court, and then the Honorable Court has also said that yes, the interest which is payable under section 50 has been determined by the competent authority without issuing a show cause notice, which is against the principle of natural justice. He will have to issue a show cause notice, give an opportunity of being heard. जैसे मैंने अभी जब starting किया discussion का, तो we have discussed one thing कि कोई भी ऐसा document, कोई भी ऐसा fact जो आपके अगेंस्ट में यूज होने वाला हो, तो सेक्शन 75 बोलता है क्लियरली, जो डिटर्मिनेशन का तरीका है सेक्शन 75 76 में आप देखोगे इसी लॉ में, वो क्लियरली बोलता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है. ये आज से नहीं है, ये पहले से है, प्रायर रिजीम में भी ऐसा ही था. सो देयरफॉर it is against the natural principles of natural justice, and therefore it needs to be determined first under section 73, and then thereafter the interest can be recovered. This is the same judgment. Soumya Spinners Private Limited. In this, the assessee has filed a belated return for June 2017. June 2017 meaning thereby पुराने लॉ में इसने belated return भरा और उसको कम्युनिकेट कर दिया. डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने इसको कम्युनिकेट किया कि जो भी आपने वो क्रेडिट लिया है वो आपने गलत तरीके से लिया है. Therefore, the petition was filed by the taxpayer challenging the action of the competent authority, as no show cause notice has been issued under section 73 for the purpose of this reversal. The Honorable Court in this matter also have said that जो भी आपका communication था, let us keep that in abeyance till the show cause notice attains the finality, as implementation of the communication will render the entire exercise post show cause notice infructuous. So first you issue the show cause notice, and then automatically जो आपकी petition है वो खुद ही infructuous हो जाएगी, because आपने उसी को challenge किया. Matrix Cellular, I am skipping this again to be skipped. Commercial steel engineering, let me touch upon this. एक आपने प्रोविजन देखा था, उस प्रोविजन में ऐसा लिखा हुआ था कि जो यूटिलाइजेशन है और अवेलमेंट है. सी सेक्शन 73 कैन बी इन्वोक्ड वेयर देयर इज नो पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, erroneous refund, or the input tax credit is wrongly utilized or availed. So in this question the same issue was discussed. हालांकि वो सेनवेट क्रेडिट, ये ट्रांस 1 की क्रेडिट से रिलेटेड था क्वेरीज में, लेकिन एक प्रिंसिपल जो निकल के आ रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है इस केस में. ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, कमर्शियल स्टील इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. रिट पिटिशन का नंबर है 2125. सिविल रिट जुरिडिक्शन केस नंबर इज 2125 ऑफ 2019.
द मैटर बिफोर द कोर्ट वाज कि अगर मैंने 1 करोड़ का गलत क्रेडिट ले लिया, लेट्स से ट्रांस 1 से, यही मैं मान लेता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और वो क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा, दैट क्रेडिट वाज अवेल्ड एंड इट वाज in my electronic credit ledger. I have never utilized that credit. I'm repeating, I have never utilized that credit. Can you ask for the question in this was, can you ask for interest and recovery under section 73 for this particular the credit which was wrongly availed? The answer given by court was no. The answer given by court was no. हम डिटेल में डिस्कशन जो हमारा केस लॉ एनालिसिस रहेगा in that analysis this case will be discussed at length. Please appreciate friends, कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया and then they have said कि please read this words have to be read at the credit input tax credit which is wrongly availed and utilized. It cannot be only availed. If you have availed and put that in electronic credit ledger and then you are reversing at certain point of time, just because this should not be taken by you, you cannot ask for credit because you have never utilized this. You have never utilized this. That was the thing which has been adjudicated in this Commercial Steel Engineering Corporation versus State of Bihar. Rest we'll be discussing at length in the in our series which we are going to launch, and rather it is I'll be announcing it today. From today only we'll be starting the registrations also of the same program. Moving to next section, section 74. देखिए section 73 what we have discussed till now and section 74 has only one difference. क्या difference है वो कि 73 में बोला था कि कोई शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट है, एरोनियस रिफंड है या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली यूटिलाइजेशन और अवेलमेंट है, बट फ्रॉड नहीं है वहां, सप्रेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां, तो 73 जाएगा. लेकिन अगर यही सिचुएशंस में कोई फ्रॉड हो, सप्रेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, then section 74 subsection 1 will be invoked. Rest everything is same, meaning thereby if there is any tax which is not paid, short paid, erroneously refunded, or input tax credit which is wrongly availed or utilized by reason of fraud or any willful misstatement or suppression of acts, then the issuance of notice will be under subsection 1 of section 74. प्लीज बेयर दिस इन माइंड. यही केवल डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. बाकी के सबसेक्शंस में लेट अस कंपेयर वन बाय वन सो दैट आपको रिवाइज भी हो जाएगा और यू विल बी इन अ पोजीशन टू कीप दिस इन माइंड. तो अगर ऑफिसर को ये लगता है, जो आई एम सॉरी टू से बट 99 नहीं 100% केसेस में उनको यही लगता है कि इसमें फ्रॉड था, इसमें विलफुल मिस स्टेटमेंट था या सप्रेशन था, अगर आपका कोई बोनाफाइड बिलीफ भी होगा ना, तो भी द ऑफिसर इज नेवर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट एंड फॉर हिम it will always be by reason of fraud, willful misstatement or suppression. And trust me friends, it is their duty also because they are the revenue collecting officers and they will have to focus and they will have to treat any transaction which leads to a short payment of tax that it was undertaken with an intention to evade payment of tax. So केवल एक ही चीज है, to evade tax 73 में भी था, to evade tax 74 में भी है. So to evade tax is not important. To evade tax with the reason of fraud, suppression or misrepresentation is important. वो अगर है तो 74 लग जाएगा. 74 में उसको शोकॉज नोटिस देना है. सबसेक्शन 1 में यही डिफरेंस है. सबसेक्शन 2 वहां पे क्या था, जो सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 73 में जो टाइम स्पेसिफाइड है, यानी 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसके 3 महीने पहले आपको शोकॉज नोटिस देना था. दैट वाज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 73. सबसेक्शन 2 ऑफ 74 बोलता है 6 months पहले, यानी जो टाइम स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 10 में, उससे 6 महीने पहले आपको कम से कम शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा. इट इज एटलीस्ट 6 months प्रायर. Okay, now one very important point to be noted here which I skipped in section 73 but now I want to touch it. Please read the words. It says the proper officer shall issue the notice. It is issuance of notice, it is not serving of notice. I'm repeating friends, it is issuance of notice under subsection 1 at least 6 months prior. It is not the service of notice, meaning thereby it can be, मेरे ख्याल से आप सब समझ गए हो, it can be misused also. 3 महीने पहले की डेट डाल के वो नोटिस इशू कर देंगे. एंड
Please appreciate there is a provision of Rule 142 also which says that electronically also they will have to issue something. I'll try to touch upon that, although rules हम cover नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको एक brief touch upon करूंगा, और उसमें हमने एक argument, एक already हम गुजरात हाई कोर्ट में already we have filed a matter against that particular rule and we have challenged this rule per se. So वो भी मैं, चलिए मैं अब touch करता हूँ इसके बाद, लेकिन please try to understand, it says shall issue the notice. So the notice cannot be, the notice has to be issued. That is the only thing that they are saying. They are not saying that the notice shall be served at least 6 months prior or 3 months prior in section 73. तो issue कर देना है आपको. अब इस पे आप कितना argue कर सकते हो, कैसे argue कर सकते हो, that you will have to take care of. But this is the point which I wanted to raise. The words used are shall issue the notice. So keep that in mind. They will be issuing the notice. It is not mandatory that it has to be served at least 6 months prior. तो इशू 6 महीने पहले कर देगा, भले आपको 5 दिन पहले मिले. That also can be a valid situation, valid notice under this subsection 2. That is my reading. Maybe I am wrong. That is my reading कि भाई उतना रहेगा. अभी 142 की अगर हम बात करते हैं, रूल 142. रूल 142 शोकॉज नोटिस के बारे में नहीं है फ्रेंड्स. लोगों को गलतफहमी है, लेकिन वो ढंग से अगर पढ़ें तो इट सेज कि द पर्सन, द प्रॉपर ऑफिसर शैल सर्व, उसमें वर्ड लिखा है शैल सर्व, along with लिखा है. The word used is the proper officer shall serve along with clause A notice under section so. ये सारे sections लिखे हैं. तो जो शोकॉज नोटिस आप सेक्शन 73 में आप इशू कर रहे हो, उसके साथ में आपको DRC 01 इशू करना है. That is what is specified under Rule 142 Sub Rule 1 Clause A. फ्रेंड्स उसी में एक नया रूल इंसर्ट हुआ था, सब रूल इंसर्ट हुआ था, विच हैज सेड कि 73 74 की जहां प्रोसीडिंग्स होगी वहां पे आपको पहले एक इंटीमेशन भेजना पड़ेगा जिसको आप बोलोगे DRC 01A. वो सारे फैक्ट्स को नरेट करके भेजेगा और उसके बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आता पार्ट बी में या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू विल इशू द शोकॉज नोटिस. एंड शोकॉज नोटिस कैनॉट बी इशूड और इट इज नॉट नेवर सेड एंड नोवेयर इट इज सेड इन द लॉ दैट शोकॉज नोटिस हैज टू बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली. It is only along with the showcause notice that a summary notice under DRC 01 has to be issued electronically. So दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है. शोकॉज नोटिस आपका अलग से आएगा, जो डिटेल्ड शोकॉज नोटिस होगा उसका एक समरी शोकॉज नोटिस जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा अंडर रूल 142 सब रूल 1 क्लॉज ए. Please keep this in mind. Rest we'll discuss at the time when we'll be discussing the rules part, because this I commit that we'll be starting rule series very soon. Once it is over, within or maybe immediately after this series is over, within a week or within 2-3 days we'll be starting the rule series. So don't worry about it. We are certainly going to complete that. और वो rules के साथ में मैं act को भी compare करके I will revise the everything. Subsection 3, वहां subsection 3 क्या था कि आप स्टेटमेंट इशू कर सकते हो जहां पे आप सब्सिक्वेंट पीरियड्स को कवर करना चाहते हो. यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है. देयर इज नो डिफरेंस. सो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम ऑन दिस, ऑन डिस्कशन ऑफ दिस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एट लेंथ. सबसेक्शन 4 वहां क्या था कि अगर जो ग्राउंड से वो सेम है तो जो स्टेटमेंट रहेगा इट विल बी कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट इशूड अंडर और शोकॉज नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 प्रोवाइडेड द ग्राउंड्स रिलाइड अपॉन आर सेम. सेम यहाँ पे भी है. जो पुराने नोटिस सबसेक्शन 1 में अगर ग्राउंड्स थे वही ग्राउंड्स हैं तो आपको ये स्टेटमेंट इशू कर सकते हो. नाउ फ्रेंड्स प्लीज बेयर इन माइंड द स्टेटमेंट विल बी इशूड अंडर सेक्शन 73 एंड नॉट अंडर सेक्शन 74, बिकॉज 74 के लिए फ्रॉड सप्रेशन का होना मैंडेटरी है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सर्विस ऑफ स्टेटमेंट, this statement subsection 3 में the service of statement under subsection 3 shall be deemed to be service of notice under 73 subsection 1. 74 में it cannot be issued because now it is within the knowledge of the department and therefore it cannot be said that there is a suppression or misrepresentation. तो वो 74 में ना जाके वो 73 में जाएगा. This is what is envisaged in this law, जो अच्छी चीज है. otherwise they could have said कि 74 1 में ये नोटिस इशू होगा. ऐसा नहीं है. So it has to be subject to the conditions that the grounds relied upon are same which were in the earlier case. Now let me read this subsection 4 so that if there is any ambiguity we'll be clearing that. The service of statement under subsection 3
shall be deemed to be the service of notice under subsection 1 of section 73, subject to the condition that grounds relied upon in the statement, in the said statement, except the ground of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax for the period other than those covered in subsection 1 are same as are mentioned in the earlier notice. Meaning thereby, even if there is no fraud, even if there is no willful misstatement or suppression, then also you can issue the notice under section 73 subsection 1. तो वो स्टेटमेंट आप इशू कर सकते हो और वो नोटिस प्रिज्यूम किया जाएगा 73(1) में आपने इशू किया. सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 वहां पे क्या था कि आप खुद डिटरमाइन कर रहे हो या डिपार्टमेंट आपको आके बोल रहा है. अगर आप टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट आप भर देते हो तो 73(5) में बोला था कि मैटर कंक्लूड हो जाएगा, इंटीमेट कर दीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा. 74(5) क्या बोलता है कि टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एंड 15% पेनल्टी ऑन सच टैक्स. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि वहां पे बोला था टैक्स विद इंटरेस्ट. तो जहां पे भी फ्रॉड है नहीं है, सप्रेशन नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां पे खाली टैक्स और इंटरेस्ट आपने भरना है. जहां पे फ्रॉड या सप्रेशन है वहां पे आपको टैक्स, इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी भरना है, तो आपको शोकॉज नोटिस नहीं मिलेगा. वो सबसेक्शन 6 बोल रहा है. जो वहां पे भी सबसेक्शन 6 ने बोला था कि एक बार आपको इंटीमेशन मिल गया तो उसके बाद शोकॉज नोटिस इशू नहीं करेगा ऑफिसर कि उसको पूरा पेमेंट मिल गया है, तो उस टैक्स और उस पेनल्टी और उस इंटरेस्ट तक के एक्सटेंड तक वो शोकॉज नोटिस इशू नहीं करेगा. बट सबसेक्शन 7 वहां पे भी क्या था कि अगर इंटीमेशन मिला, जो मैंने एग्जांपल लिया था 1 लाख रुपए का लाइबिलिटी था आपके हिसाब से और आपने 80,000 पेमेंट किया, तो 20,000 डिफरेंस के लिए आप कर सकते हो. द सेम प्रोविजन इज हियर आल्सो. यहाँ पे भी अगर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वट एवर अमाउंट यू हैव पेड एंड इन्फॉर्म्ड to us under subsection 5 still falls short of the amount which is actually payable, then he shall proceed to issue the notice under subsection 1. तो वो subsection 1 में notice issue कर सकता है. तो provisions are almost same, थोड़ा बहुत difference है, तो I am touching upon the difference and not going into detail of that. Subsection 8 it says जहाँ पे कोई भी person chargeable under subsection 1 में वो अगर टैक्स की पेमेंट कर देता है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता है और पेनल्टी 25% पे कर देता है विद इन 30 days of the issuance of show cause notice, then in that case the matter shall be deemed to be concluded. What is deemed to be concluded we'll see later, just be with me. What is deemed to be concluded we'll see later. 73 में भी ये वर्ड पढ़ा था, 74 में भी पढ़ा. We'll see that in explanation which is given here, but please be with me. Subsection 8 says tax, interest and 25% penalty. वहां क्या था 73 में इट वाज स्टिल टैक्स एंड इंटरेस्ट. तो 73 में सबसेक्शन 5 भी टैक्स और इंटरेस्ट बोलता था और सबसेक्शन 8 भी टैक्स और इंटरेस्ट बोलता था. यहाँ पे सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, टैक्स अलॉन्ग विद 15% पेनल्टी एंड इंटरेस्ट. सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, टैक्स, इंटरेस्ट एंड 25% पेनल्टी. तब ये मैटर कंक्लूडेड माना जाएगा. नाउ मूविंग टू सबसेक्शन 9, इट सेज द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी made by the person chargeable with tax determine the amount of tax, interest and penalty due from such person, issue the order. तो वो डिटरमाइन करके ऑर्डर इशू करेगा. सबसेक्शन 9 सेम वहां पे भी था. सबसेक्शन 10 वहां पे क्या था, 3 years from the due date of filing of annual return. Here it is 5 years from the due date of filing of annual return. That is the only difference. 3 की जगह यहाँ एक्सटेंडेड पीरियड है 5 साल. क्यों? क्योंकि फ्रॉड, सप्रेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कल्यूजन करके जो शब्द पहले हुआ करता था वो शब्द अब नहीं यूज किया इन्होंने. पहले 4 शब्द हुआ करते थे जीएसटी से पहले, और एनी अदर कंट्रावेंशन भी इंक्लूड किया जाता था 73 में, सेक्शन 73 ऑफ द फाइनेंस एक्ट. नाउ इन दिस सेक्शन देयर आर ओनली 3 टर्म्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. सो द टाइम लिमिट फॉर 74 विल बी 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट, और जहां पे रिफंड है वहां पे 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड. सबसेक्शन 11 वहां पे कुछ और था, यहाँ कुछ और है. यहाँ ये क्या बोल रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि वेयर एनी पर्सन हु हैज बीन सर्व्ड विद एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 pays the tax along with interest payable thereon and a penalty equivalent to 50% of such tax within 30 days of the communication of the order. सेक्शन 73(11) ये बोलता था कि अगर आपको कोई लायबिलिटी थी जो आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया और वो आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया, तो भी आपके ऊपर
पेनल्टी लगेगी जो सबसेक्शन 9 में था, विच इज टू द एक्सटेंड ऑफ 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। यहाँ पे ये है कि आपके पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर, ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अगर आप टैक्स, इंटरेस्ट और 50% पेनल्टी भर देते हैं, then the matter or the proceeding shall be deemed to be concluded. So this is section 74 subsection 11, friends. Now these two explanations are again very important. Explanation 1 says, for the purpose of section 73 and this section, that is 74, first, the expression all proceedings in respect of this said notice shall not include proceedings under section 132. जहां पे भी आपने ये पढ़ा है that all proceedings under this section shall be concluded, shall be deemed to be concluded, so all proceedings will not include the proceedings under section 132, meaning thereby prosecution. Second, where the notice under the said proceedings is issued, where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other person, जैसे आपने मेन पर्सन बना दिया किसी को, कंपनी को, और उसके बाद उसके सारे डायरेक्टर्स को भी आपने बना दिया, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or 74, और वो कंपनी का प्रोसीडिंग अगर कंक्लूड हो गया, then the proceedings against all the persons liable to pay penalty under section 122, 125, 129, 130 are deemed to be concluded. तो बाकी भी जितने लोग थे उन सबके अगेंस्ट पे भी जो 122, 125, 129, 130 की प्रोसीडिंग्स थी, that also shall be deemed to be concluded. केवल एक ही प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगी and that proceeding will be the proceedings under section 132, which deals with the prosecution proceedings. Explanation 2, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं शायद मेरा रीडिंग स्ट्रिक्ट है या मेरा इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट है, बट आई नेवर हैड एनी इंटेंशन और आई नेवर हैव एनी इंटेंशन कि मैं किसी भी अपने पार्टिसिपेंट या किसी भी अपने फ्रेंड को या जहाँ भी मैं लेक्चर्स लेने जाता हूँ वहाँ किसी को भी मैं डराऊं, बट looking to this explanation, this meaning which is given in this law, this is really a dangerous provision which has been, or explanation given. Explanation says, for the purpose of this act, the expression suppression shall mean, the expression suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report, or any other document furnished under this act or rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. Now this is so broad. Non-declaration of any facts or information in the return ठीक है, statement ठीक है, report or any other document ठीक है, but further ये बोलता है failure to furnish any information on being asked for, that becomes very broad. और अगर आप ये नहीं करते हो तो you will be said to fall within the purview of the expression suppression, and therefore section 74 can be invoked, and therefore the extended period can be invoked. So please keep this explanation 2 in mind, and accordingly you act, and accordingly ही आप अपने जो नोटिसेस हैं उसको इवैल्यूएट करें कि 74 में जो उसने दिया है वो बराबर है या नहीं है. Again this rule surplus and ये सब I'm skipping, these are the forms which are required. Let us touch upon one or two case laws in this particular section, and then we'll move to section 75. This is again the matter which was argued before the Honorable High Court of Gujarat, and in this matter the petitioner was engaged in supply of wheat flour, muslin flour, cereal flour, etc. Competent authority has visited the premises of the assessee and observed he is not paying any tax on branded or unbranded goods. In both, he was not paying any tax. Competent authority under the threat and coercion received 3 post-dated checks that I have covered already कि post-dated checks ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. I have given my view, and thereafter issued the show cause notice to recover the amount and have also provisionally attached 2 bank accounts. जो उनका routine feature हो गया अभी तो आजकल. So the court have observed and they have said that the assessee shall return the petitioner 3 checks collected. सबसे पहले तो जो आपने post-dated checks लिए थे वो आप वापस दीजिए. Secondly, provisional attachment of the petitioner's 2 bank accounts is removed. ये भी कोर्ट ने रिमूव कर दिया. This is, however, subject to the following conditions. The petitioner shall maintain all time a stock worth minimum sum of rupees 50 lakhs.
till the final disposal of the adjudication proceedings arising out of show cause notice dated so and so. And second, the petitioner shall file an undertaking to this effect under the court latest by so and so date. सो कोर्ट ने उनका बैंक अकाउंट भी खोल दिया और उनके तीनों चेक्स भी वापस दिला दिए और इनको यही खाली बोला कि आप हमेशा 50 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन करेंगे और रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दिया कि आप शो कॉज नोटिस का एडजुडिकेशन करें. दिस इज मैटर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला. इसका अगर पिटीशन नंबर यू कैन नोट डाउन, रिमार्क फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 4835 of 2018, 4835 of 2018, Honorable High Court of Gujarat. Mozart Global Furniture versus State Tax Officer Intelligence, Nilamba, High Court of Kerala, writ petition number 3445770, 34494, 34505, 531, 560, and 34441 of 2019. In this case, the competent authority has again initiated search and seized the documents. Petitioner was served with a notice under section 74, read with section 122. 74 ka notice read with 122, which is offences and penalties, proposing the demand of a tax penalty from estimated turnover for the assessment year 1718, 1819. Copy of the documents were not provided, which was seized at the time of search. So in this case, the court held that petitioner shall approach to the respondent within 2 weeks, and respondent shall provide the copies of the documents seized from their premises. Section 67 subsection 5, if you can remember, उसके अंदर पावर दिया था कि आप ये अपनी कॉपीज ले सकते हो, तो the court is allowed. Respondent shall also grant the petitioner 3 weeks time from the date of supply of copies for preferring their objections to the reliance sought to be placed in the notice on the said document. So they have given 3 weeks time for preparation to the persons also, to the petitioner. And respondent shall within a month thereafter proceed to adjudicate the issue in notice after hearing the petitioner. So within a month the adjudication also have to be done. So I'm skipping the third case law. This case law writ petition number I have already said. Now moving to section 75 of the CGST law. Section 75 says general provisions relating to determination of tax. So we have read the specific provisions which was section 73 and 74. Now they are prescribing certain general principles. So general principles जैसे क्या होगा, एक एग्जांपल है कि वो 1 साल के अंदर एडजुडिकेट होना चाहिए. दैट इज अ जनरल प्रिंसिपल व्हिच दे हैव गिवन. सो ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 75. सबसेक्शन 1 says where the service of notice or issuance of order is stayed by a order of a court or appellate tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in subsection 2 and subsection 10, यानी 3 months prior, और subsection 10 में 3 years, और subsection 2 and section 10 of section 74 as the case may be. तो वो period जो रहेगा जब वो period of stay वो हटा दिया जाएगा. Subsection 2, where any appellate authority or appellate tribunal or court concludes that the notice issued under subsection 1 of 74 is not sustainable, कि 74 में जो आपने extended period invoke कर दिया और आप जो कह रहे हैं कि fraud involved था या suppression involved था, वो अभी sustainable नहीं है. अगर ऐसा लगता है appellate authority ने कहा, तो जो 73 का period है 3 साल का, वो तो invoke हो ही जाएगा. So for the reason that the charges of fraud or willful misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable of such person, deeming as if the notice was issued under section 73(1). This is the provision which gives power to the officer कि वो 74 में शो कॉज नोटिस इशू करे, और फिर भी अगर आप प्रूव कर देते हो कि नहीं 74 में जो आपने किया वो गलत है, क्योंकि जो चार्ज आपने लगाया फ्रॉड का या विलफुल मिसस्टेटमेंट का या सप्रेशन का वो गलत है, तो भी वो 5 साल का तो ठीक है नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 साल का वो कर पाएगा 73(1) में. दैट इज द प्रोविजन ऑफ 75 subsection 2. Subsection 3 it says where any order is required to be issued in pursuance of the direction of appellate authority or appellate tribunal or a court, such order shall be issued within 2 years from the date of communication of such direction. कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो इशू करना चाहिए बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द appellate authority or court or tribunal, it has to be issued within 2 years from the date of communication. An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty. So this is to be kept in mind. जनरली क्या होता है, शोकॉज नोटिस आता है उसमें 30 दिन का टाइम होता है और वो
हम साइड में रख देते हैं कि जब हियरिंग का नोटिस आएगा तब देखेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने हियरिंग नहीं मांगी है तो शायद वो ना भी दे, ऑल्दो ही विल हैव टू गिव बिकॉज अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन, अदरवाइज उसका केस वीक हो जाता है. Still, I would recommend and suggest कि as soon as you receive a show cause notice, please give a reply to it. If not detailed reply, if not the defense reply, you can say that we have received this show cause notice and we'll be replying back to this show cause notice over the period of time. So you can seek some time and then you can write that before adjudication of this particular show cause notice, we need an opportunity of being heard in person. So they will give you a personal hearing or any adverse decision is contemplated against such person. Now this is important. ये पॉइंट मैंने आपको कवर किया था दूसरे तरीके से कि कोई भी डॉक्यूमेंट उसको मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कोई कंक्लूजन पे वो ऐसा पहुंच रहा है which is going to be against the taxpayer, so he will have to give an opportunity of being heard under subsection 4 of section 75. That is the general principle. Subsection 5, the proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with the tax, grant time to said person and adjourn the hearing for the reasons to be recorded in writing, provided that no adjournment shall be granted for more than 3 times to a person during the proceeding. 3 बार से ज़्यादा उसको adjournment नहीं मिलेगा. Now friends, यहाँ पे एक केस है, I do not remember the citation of that particular case, but the principle I remember and I would like to share with you. आजकल एक नया स्टाइल क्या किया था कमिश्नर अपील्स या एडिशनल कमिश्नर अपील्स ने, दे वर इशूइंग वन लेटर ऑफ हियरिंग और एडजुडिकेशन ऑफिसर, तीनों लोगों ने क्या करते थे, एक नोट लेटर इशू करते थे, उसमें 3 डेट्स मेंशन कर देते थे. दे यूज्ड टू मेंशन 1st, 8th, 15th. ये तीनों दिन में से आप किसी भी दिन आ जाइए पर्सनल हियरिंग के. was that letter giving 3 assumed to, or was the letter which was giving 3 opportunities to you, जो यहाँ पे लिखा है no adjournment shall be granted for more than 3 times? To my view and as per that judgment, the answer is no. उसको 3 डिफरेंट लेटर्स इशू करने पड़ेंगे गिवन 3 डिफरेंट डेट्स. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. और अभी भी उसमें मैं फिर भी कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि अब वो क्या करते हैं उस ऑर्डर के बाद, दे आर इशूइंग 3 डिफरेंट लेटर्स ऑन द सेम डे. एज पर मी, the 3 opportunities will be, first you give an opportunity on that date. If I am not appearing or I am submitting for again a request for adjournment, then thereafter you issue a second letter. ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही 1 तारीख, 8 तारीख और 15 तारीख का 3 लेटर बना के दे दीजिए. नो, एज पर मी आप 3 अपॉर्चुनिटीज दें, तो पहला अपॉर्चुनिटी जब दें उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाए और फिर आप दूसरी अपॉर्चुनिटी देना सोच रहे हैं और मैं मांग रहा हूँ, तब आप वो दूसरी अपॉर्चुनिटी उसके बाद दें, देन इट विल बी अ वैलिड opportunity. Otherwise I think if had given an opportunity और मेरे पास अगर ऐसा कोई मैटर है तो I will certainly argue against that in the court of law, because that was never the intention कि आप तीनों डेट्स एक साथ ही दे दीजिए. The intention was कि sufficient cause है. अब 1 तारीख को आपने दिया, 1 तारीख को मैं अपीयर हो रहा हूँ या लेटर दे रहा हूँ आपको, हिसाब मैं 1 तारीख को आया हूँ लेकिन मैं पूरी तरीके से अभी तैयारी नहीं कर पाया, तो मुझे 2 महीना और लगेगा. एंड आई एम giving evidences also and I'm satisfying also, I'm convincing also कि इसमें 2 महीना लगेगा जो मुझे डिफेंस सबमिट करना है. मैंने कहीं पे कुछ लेट्स से कोई एक्सपर्ट एडवाइस मांगा हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइस विल बी गिवन आफ्टर 2 months. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? अगर आप 7 दिन के बाद की डेट दे दें तो मेरी तो 3 हियरिंग्स या 3 अपॉर्चुनिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी. सो दिस इज जस्ट अ व्यू, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस आल्सो, बट प्राइमा फेसी दे आर सेइंग कि अगर ऐसा कोई सफिशिएंट कॉज रहेगा देन दे कैन एडजॉर्न इट 2-3 times. Subsection 6, the proper officer in his order shall set out the relevant facts and the basis of his decision. It has to be a speaking order. It cannot be जिस तरीके का ऑर्डर रहता है कि साहब एक पेज में लिख दिया कि भाई इतना हमारे हिसाब से शोकोज था, ये शोकोज नंबर था और ये हमारे हिसाब से फाइनल लायबिलिटी है, इतना टैक्स है, इतना इंटरेस्ट है, इतना पेनल्टी है. नो, he have to issue a notice, order which should state the relevant facts and the basis on what basis he is taking the call and the final decision. That is very important. It needs to be a speaking order. It cannot be a plain information sheet. The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice. ये एक प्रिंसिपल है जो बहुत पुराना प्रिंसिपल है. अगर आपने 50 लाख का नोटिस ऑर्डर दिया, शोकस दिया, तो आपको एडजुडिकेशन के समय लगा कि यार ये तो 50 लाख नहीं, इसमें तो 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है. You cannot extend that amount. The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice, and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice. तो अगर आप कोई एडिशनल ग्राउंड्स आपको पकड़ में आया जो शोकोज में नहीं लिया हुआ है, तो आप वो एडिशनल ग्राउंड्स को कॉग्निजेंस में लेके
ऑर्डर नहीं दे सकते. फॉर दैट एडिशनल ग्राउंड्स देयर हैव टू बी एन एडिशनल नोटिस टू बी इशूड if it is within the framework or within the time limit which is specified under section 73 and 74. Subsection 8, it says where the appellate authority or the appellate tribunal or court modifies the amount of tax determined by the proper officer. Appellate authority कोई amount को change कर देती है, modify कर देती है, which power they have, then the amount of interest and penalty shall stand modified accordingly, taking into account the amount of tax so modified. So that also will be modified accordingly, taking into account the main order. Subsection 9, it says interest on the tax short paid or not paid shall be payable whether or not specified in the order determining the tax liability. This is very important. ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल ये बताता है कि unless my order says that this is the amount of penalty to be paid, I cannot be made liable for penalty even though there is a provision in the law. Please bear in mind, friends, this is my view and I am very adamant and strong on this view. कि अगर आपका एक order है, let's say the order is of 1 crore rupees, the issuance of show cause notice was under section 74, still the order has nowhere mentioned that this is an order issued under 74(9) and this is the amount of tax you will have to pay along with interest, but the reference of penalty is not there, then the penalty cannot be invoked. So that is what it is saying, that the interest, but in case of interest, even if it is not written that the interest is chargeable, the interest will have to be paid. Interest is something which is compensatory and it will be payable irrespective of the fact that the order which determines the liability has no reference or no mention about the interest. Subsection 10, the adjudication proceedings shall be deemed to be concluded if the order is not issued within 3 years as provided in subsection 10 of 73 or within 5 years as provided in subsection 10 of 74. अगर वो ऑर्डर इशू नहीं होता इस पीरियड में, then it will be deemed that it has become time bar और फिर उसका रिकवरी नहीं हो सकता, that amount will be freezed. Subsection 11, friends, an issue on which the appellate authority or the appellate tribunal or the high court has given its direction which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the appellate tribunal or high court or the supreme court against such decision of the appellate authority or tribunal or high court is pending. जहाँ पे मेरे फेवर में कुछ डिसीजन आ गया एज अ टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आ गया और डिपार्टमेंट फर्दर उसमें गया है अगर अपील में और वो पेंडिंग है, देन द पीरियड इज स्पेंट between the date of decision of the appellate authority and that of the appellate tribunal or the date of decision of the appellate tribunal and that of the high court. यानी appellate authority और appellate tribunal or high court or the date of decision of the high court and that of supreme court shall be excluded from computing the period under section 73(10) or 74(10). तो ये जो पीरियड है, जैसे appellate authority ने कोई ऑर्डर दिया और मैं appellate tribunal में गया और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो दिया, तो ये जो पीरियड है, दिस पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पीरियड व्हिच नीड्स टू बी calculated for the purpose of 73(10) or 74(10). This is what is meant. The period spent between the date of decision of the appellate authority and that of appellate tribunal. This speaks about the decision of the appellate authority and the tribunal. तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड था, ये पूरा 1 साल 2 साल 5 साल जो भी पीरियड था, that needs to be excluded for 73 and 74. 73(10) and 74(10). Subsection 12, notwithstanding anything contained in 73 or 74 where any amount of self-assessed tax is in accordance with the in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid, this cannot happen. आपको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि आप कोई भी पेबल रख के आप रिटर्न को अपलोड कर दो, फिर भी ये प्रोविजन को हम कॉग्निजेंस में लेते हैं, प्रिज्यूमिंग दैट it is getting allowed or presuming that मैनुअली आपको अलाउ कर दिया और आपने पेबल करके फाइल किया है. तो व्हाट डज दिस प्रोविजन सेज? इट सेज notwithstanding anything contained in 73 74 both are overrided where any amount of self assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid. कोई भी ऐसी अमाउंट हो जो अनपेड रहे, either wholly or partly, or an amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of 79. तो this means that अगर आपने कोई रिटर्न में फिगर दिखा दी 5 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी है, वो आपने नहीं भरी, या 5 लाख रुपए भर दिए लेकिन 5 लाख पे इंटरेस्ट था वो नहीं भरा, तो डायरेक्टली 79 इन्वोक होगा, शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा, मीनिंग देयरबाय दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन
This becomes an exception to the general rule which I mentioned, that if the government has to recover even a single rupee, they will have to issue a show cause notice. So this become an exception कि इस केस को छोड़ के बाकी हर केस में they will have to issue a show cause notice. Subsection 13, friends, where any penalty is imposed under section 73 or 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provisions of this act. जहाँ पे 73 का पेनल्टी लगा दिया या 74 का लगा दिया, तो फिर कोई और दूसरी पेनल्टी नहीं लगा सकते इस प्रोविजन ऑफ द एक्ट में. So that is section 75 that we have discussed. Moving to, this is one particular judgment of Honorable High Court of Madras in Kaiser Beverages LLP, wherein the export was there, and the petition numbers are 27690, 27690, 27692, 27695, and 696 and 698 of 2018. तो आप कोई भी एक लिख लीजिए 27690 of 2018, उस पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. In this case what has happened was 90% refund provisional basis पे मिल गया था जुलाई to September का to the petitioner. Now revenue has issued a show cause notice that this refund which has been given to the taxpayer was a erroneous refund. He was not eligible for that, or whatever reasons were mentioned in the show cause notice. And when the refund claim was made by the assessee in 2018, मार्च 2018 से जुलाई 2018 के ड्यूरेशन का जो उसने रिफंड का एप्लीकेशन किया, उसमें से उसने वो अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जो उसने जुलाई टू सितंबर 2007 का पे किया था. And against this, the honorable the petitioner has moved for the petition. Now the court have said, although it is not a very favorable thing, but the court have said that it was held that the adjustment of refund of the amount was invalid. The revenue was directed to pay the refund amount adjusted. रेवेन्यू को बोल दिया कि आपका जो भी आपने एडजस्ट किया मार्च से जुलाई 2018 का, you please repay that. And then they have said, as per the provisions of section 1077, 10% of the disputed amount is paid, then recovery proceeding should be stayed. So that is a pre-deposit which is specified in 1077 कि आप 10% भी भर देंगे. लेट्स से आपका जुलाई टू सितंबर का 1 करोड़ का था और उसके सामने आप 10 लाख रुपए भर देते हैं, तो you are free, and then the entire recovery will be stayed. And therefore जितना भी आपने रिफंड ब्लॉक किया है या रिफंड आपने विदहेल्ड कर लिया है, वो रिफंड आप दीजिए इनको, और 10% की जो अमाउंट है प्री डिपॉजिट की, वो जो असेसी है, he will obey that or honor that particular section. I'm skipping this. Hotel Harishri Kilikolur versus Assistant Commissioner, 37273 of 2018, 37273 of 2018, Honorable High Court of Kerala. In this, the petition was filed to get the stay on the coercive steps to be taken by the respondents, as the assessee has already filed an appeal for stay on assessment order before the appellate authority. The stay is requested for the period taken by the appellant authority to allow the appeal. Now the court have said that yes, as the assessee has collectively exercised the rights of appeal, the procedural fairness demands that the authority should wait, and therefore the honorable court have said that there should not be any coercive action against the taxpayer. LM Wind Power, Honorable High Court of Bombay, LM Wind Power Blades India Private Limited versus State of Maharashtra, 6968, I'm sorry, 6968 of 2019. I'm repeating, 6968 of 2019. Under the order of the appellate authority passed on 26th of March 2019, the authorities encashed the rights of bank guarantee. 8 बैंक गारंटी जो उनको दी गई थी उसको उन्होंने इनकैश करा लिया. न्यू असेसी ने अपील कंटेंट किया कि encashment was done even when it was informed to the authorities that they are preparing for the appeal. तो ये इनका एलिगेशन था कि जब आपने मेरे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर दिया, मैंने कोई गारंटीज आपको दी हुई थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपील में जा रहा हूँ, तो यू शुड हैव वेटेड फॉर दैट 90 days and you should have allowed me to use or exercise my right of appeal.
Then in this case also the petition was allowed and adjourned for a further date, but adjournment was done because the respondents requested for time to submit their reply. But otherwise the court was convinced and they have given the clarity. Skipping this, this Sirajuddin we have already covered. Now moving to section 76, friends. I think we'll be able to cover till section 77 or 78 today, and then section 79, which starts from recovery, section 79 to 84 will be covering tomorrow. Because हम जल्दबाजी करके अगर ये sections को थोड़ा सा भी speed में cover करते हैं तो we will be in a position to leave certain very important aspect that needs to be considered. बहुत important चीजें हैं इसमें इन sections में, and these sections are the basic sections wherein the government enforces their right of demand or recovery. कोई भी डिमांड करेगा वो या कोई भी रिकवरी करेगा वो इन्हीं सेक्शंस में करेगा. तो देयरफॉर 73 74 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट 75 है, बिकॉज इट गिव्स राइज टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द डिमांड. And then 76 and 77 again becomes very important because 76 says tax collected but not paid. You have collected the tax and not paid. तो वो डिमांड की बात कर रहा है. और 77 बोल रहा है टैक्स wrongly collected and paid. वो 77 में बात कर रहा है. तो we'll touch upon these two sections minimum. Or friends, then there is an announcement also which I would have to make for the session with relation to the series of this case law analysis. That announcement also I'll be making, or we are starting the registrations from today. Section 76 says tax collected but not paid to government. Now it's subsection 1 says notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any appellate authority or appellate tribunal or court or in any other provisions of this act or rules made thereunder or any law for the time being enforced. Please hold. Please just pause kariye. Let us read this again. It says notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any appellate authority or appellate tribunal or court or in any other provisions of this act और रूल्स मेड देयर अंडर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स. सब इंक्लूड कर लिया, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो, कोर्ट का ऑर्डर हो, इस प्रोविजंस में हो, इस लॉ में, रूल्स में हो या किसी भी दूसरे लॉ में हो. एवरी पर्सन, सो इट इज ओवरराइडिंग एवरीथिंग. इट सेज कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, एवरी पर्सन who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act and has not paid the said amount to the government shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not. यानी अगर किसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अगेंस्ट में भी आपने अगर कुछ टैक्स कलेक्ट किया है ये बोल के कि आप वो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, then you will have to pay the said amount to the government. Clear? So I'm reading from every person who has collected. It says every person, चाहे वो registered है या नहीं registered है, please bear in mind it includes every person, whether it is a taxable person, registered person or any other person. So every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act and has not paid the said amount to the government, और उसने पे नहीं किया, shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not. चाहे वो taxable है, नहीं है, exempted है, क्या है, nothing to take care of. You will have to pay that tax which you have collected as tax under this act. Clear? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो अभी मेरे जस्ट क्लिक हो गया, तो लेट मी शेयर दैट आल्सो, जस्ट फूड फॉर थॉट. फिर आप उसके इश्यूज लिख के भेज दीजिएगा, देन विल ट्राई टू कवर अप इन क्वेरी सेशन. द इशू इज कि आपका 12% का टैक्स लगना था, मैंने आपसे 18% टैक्स लगा के कलेक्ट कर लिया और 18% भर भी दिया एज पर सेक्शन 76. आर यू गेटिंग द इशू? 12% लगना चाहिए था, मैंने आपसे 18% कलेक्ट कर लिया 12 की जगह और 18% भी आपका भर भी दिया.
whether I will be eligible to claim credit of 18% or 12%, that is the question. Input tax credit, whether I will be eligible to claim 12% at the rate of 12%, which was the actual tax which was payable, or 18%, which was the tax which was actually collected by the supplier. There are two views in this. Let me share my view. My view is very clear. Whatever tax is written on the invoice, I will be eligible to take that credit. 18% लिखा हुआ है तो मैं 18% की क्रेडिट ले सकता हूँ. 12% अगर लिखा हुआ है और 18 कलेक्ट कर लिया है तो जो 6% है वो मैंने बेयर किया है. So I can file a refund application for that. That is my view. There is another school of thought also which says कि even 18% अगर इनवॉइस पे लिखा हुआ है लेकिन आपके गुड्स 12% में फॉल होते हैं तो आपको क्रेडिट 12% ही मिलेगी और 6% के लिए आप रिफंड जा सकते हो. आई डिफर विद दिस व्यू. माय व्यू इज दिस कि आप इनवॉइस पे अगर 18 लिखा है तो यू कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ 18%. इनवॉइस पे 12 है तो आप 12 क्लेम कर सकते हैं, 18 नहीं कर सकते, भले ही उसने 18 लिया है और आपने पे कर दिया है. और 6% जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप रिफंड ले सकते हैं. मूविंग टू सबसेक्शन 2 फ्रेंड्स. Subsection 2 says where any amount is required to be paid to the government. Where any amount is required to be paid to the government under subsection 1 and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as to why the said amount as specified in the notice should not be paid by him to the government and why a penalty equivalent to the amount is specified in the notice should not be imposed on him under the provisions of this act. Again, I would say please pause. Let us read together and then अगर कोई confusion रहेगा, बहुत simple है, फिर भी हम discuss कर लेंगे. Where any amount is required to be paid to the government under subsection 1, जो collect कर लिया आपने वो required payable हो गया. Now and which has not been so paid, वो payment नहीं किया. Then the proper officer may serve to the person liable to pay such amount जिसने collect किया था a notice requiring him to show cause as to why the said amount as specified in the notice should not be paid to the government and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed on him under the provisions of this act. This is the show cause notice provision, that the show cause notice can be sent. Subsection 3, it says the proper officer shall, after considering the representation, I'm sorry, there was some problem. The proper officer shall, after considering the representation if any, the proper officer shall, after considering the representation if any, जो आपका शोकॉज नोटिस आया सबसेक्शन 2 में, उसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है, उसको कंसीडर करने के बाद, made by the person on whom the notice is served under subsection 2, determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay the amount so determined. तो जो भी डिटरमाइन हो गया उसके बाद वो पे कर देगा. Moving to next subsection 4, it says the person referred to in subsection 1 shall, in addition to paying the amount referred to in subsection 1 or subsection 3, also be liable for interest thereon at the rate specified under section 50 from the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the government. तो जब वो कलेक्ट किया था उसने तब से लेके जब वो पे कर रहा है, he will have to pay interest under section 50. Subsection 5, an opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person to whom the notice was issued to show cause. तो उसको ये पहले भी डिस्कशन हो गया कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग होना चाहिए, उसको एक रिटर्न में भेज देगा जैसे ही शो कॉज मिलेगा कि वी वांट टू गेट द पर्सनल हियरिंग, ताकि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले. अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आप रिटर्न रिप्लाई भेज देते हैं एंड यू राइट देयर कि वी डू नॉट वांट एनी पर्सनल हियरिंग एंड यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ आवर सबमिशन. बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू वांट अ पर्सनल हियरिंग इन पर्सन, तो आप उसको लिख के दे दें ताकि वो उस चीज को इग्नोर ना कर सके. Subsection 6, the proper officer shall issue an order within 1 year. The proper officer shall issue an order within 1 year from the date of the issuance of notice. Within 1 year, he will have to issue the order. Where the issuance of order is stayed by an order of the court or appellate authority,
appellate tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of 1 year. तो अगर stay हुआ है चाहे वो किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, तो वो जो पीरियड ऑफ स्टे रहेगा दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द period to be computed for like 1 year. The proper officer in his order shall set out the relevant facts and the basis of decision. Again, it has to be a reasoned order, a very clear order. Subsection 9, the amount paid to the government under subsection 1 or subsection 3 shall be adjusted against the tax payable, if any, by the person in relation to the supplies referred to in subsection 1. तो कोई भी अमाउंट जो गवर्नमेंट को भरा है सबसेक्शन 1 में या 3 में, वो एडजस्ट हो जाएगा जो भी अमाउंट पेएबल है सबसेक्शन 1 के नोटिस में. Subsection 10, where any surplus is left after the adjustment under subsection 9, the amount of such surplus shall either be credited to the fund or refunded to the person who has borne the incidence of tax amount of such amount. तो जैसे ही जो भी एक्सेस रहेगा उसको आप रिफंड कर देंगे या फिर आप फंड में उसको ट्रांसफर कर देंगे. Subsection 11, the person who has borne the incidence of the amount may apply for the refund of the same in accordance with the provisions of section 54. So he can make an application, as we have already discussed कि 18% 12% एक्सेस जो भी था जिसने बेयर किया होगा वो रिफंड फाइल कर सकता है. Skipping the rules and forms etc. Moving to section 77. Now friends, section 77 says tax wrongly collected and paid to the central government or the state government. To be very precise, ये केवल इतना कहना चाहता है कि आपने नेचर ऑफ सप्लाई गलत डिटरमाइन कर लिया. The nature of supply which is determined by you has been wrongly determined, and therefore you have determined the nature of supply as C and S, that is intrastate supply, whereas it was an interstate supply. And therefore करना क्या पड़ेगा कि आप पहले IGST जो करेक्ट सप्लाई है उसके सामने जो पेमेंट है वो आप करेंगे, और पुराना जो आपने गलत पेमेंट किया यानी CGST और SGST you will have to take refund of that. But the best part is that the provision per se says, this section read with rule 19 section 19 of the IGST Act says कि भाई इसका सिचुएशन में अगर कोई भी होगा then interest will not be payable. You are not liable for any interest. That is the best provision. तो अगर ऐसा कोई मिस्टेक हो गया तो nothing to worry. You can pay the right tax, take back the refund of the old tax or the wrongly paid tax or wrongly collected tax, and the interest will not be leviable on that. To subsection 1, this is the figure and I'm reading from the provision. It says a registered person who has paid the central tax and the state tax, or as the case may be, the central tax or the union territory tax on a transaction considered by him to be an intrastate supply, but which is subsequently held to be an interstate supply, shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. So they shall be refunded the amount of taxes which was paid as CGST or SGST or CGST or UTGST. Subsection 2 says a registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an interstate supply but which is subsequently held to be an interstate supply shall not be required to pay any interest on the amount of central tax and the state tax, or as the case may be the central tax and the union territory tax which is payable. So no interest leviability will be there. That is section 77. इसमें भी एक ये केस है साजी एस वर्सेस द कमिश्नर ऑफ SGST तिरुवनंतपुरम का ये जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला. The petition number is 35868 of 2018. 35868 of 2018. And in this case, the petitioner was a registered dealer and he purchased certain goods and transported them. Now, during the transit, they were detained by the competent authority, and in that situation, the consignor was by mistake remitted the amount under SGST instead of IGST. उसको C और S पेमेंट कर दिया. On payment under the wrong head, authorities have refused to release the goods, and the petitioner has filed the writ petition, and therefore the writ petition was filed. Now in the writ petition, it was disposed of on the ground that even if the remittance were to be treated as a mistake on the consignor's part, the statute empowers the authorities to transfer the deposit from one head to another, that is from SGST to IGST. Further, the respondent authorities are directed to release the goods forthwith along with the vehicle. So this is a judgment which is
which as per me sets a precedence कि आप आपस में आपने भले ही गलती में आईजीएसटी की जगह एसजीएसटी पे कर दिया था, लेकिन एसजीएसटी को आप आईजीएसटी में आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, तो दैट वाज अलाउड टू बी डन in that this particular ruling, that was Saji S versus Commissioner of State Tax, Thiruvananthapuram. This again, Sri Nayak Ferro Alloys Private Limited versus Union of India. This is a petition which was filed before the High Court of Jharkhand. Writ petition number 2246 of 2019. 2246 of 2019. In this case, what was happened? That petitioner company had to discharge their tax liability under IGST, but inadvertently, by mistake, what they have done, they have deposited under the CGST head, and therefore the writ petition was filed to get the solution. Honorable Court has said that it is not the issue that the petitioner company has concealed the transaction or has committed any fraud in discharging the tax. It is a plain case in which the tax has been paid by the petitioner to the central government, but not under the IGST head, rather under the CGST head. Further, by virtue of section 19 subsection 2, which is of the IGST Act, petitioner cannot be saddled with the liability of interest, and therefore the court is directing the respondent to consider the representation of the petitioner. And next section is section 78, initiation of the recovery proceedings. Any amount payable by the taxable person in pursuance of an order passed under this act shall be paid. कोई भी ऑर्डर के सामने कोई भी अगर अमाउंट पेबल है तो सेक्शन 78 कैन बी इन्वोक्ड, बट व्हेन इट कैन बी इन्वोक्ड, 3 months का जो पीरियड है, that needs to be learned, or that needs to be understood by this provision. So shall be paid by such person within a period of 3 months from the date of service of the said order. 3 months from the date of service of the said order. तो जब आपको ऑर्डर मिले उसके 3 महीने तक उसको भर देना है, failing which the recovery proceeding shall be initiated. If he fails, then the recovery proceeding shall be initiated. That is the original provision. And then the proviso says, provided that where the proper officer considers it expedient in the interest of revenue, he may, for the reasons to be recorded in writing, he may, for the reasons to be recorded in writing, require the said taxable person to make such payment within such period less than a period 3 months as may be specified by him. यानी जहां 3 महीने का पीरियड था, 3 महीने के पीरियड को भी आप कम कर सकते हैं अगर ऑफिसर को लगता है कि वो जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. दैट इज व्हाट liberty has been given under section 78. Otherwise, it is 3 months period which has been given to the taxpayer, that within 3 months you need to make the payment of tax. Now, this is a judgment which I would like to cover of High Court of Madras, TVL GRB Dairy Food Private Limited versus State Tax Officer. Writ petition number 30096 of 2019. 30096 of 2019. Now, in this case, the assessment order was passed for the year 2017-18 to 19-20 on 1st October 2019. It was served on 3rd October 2019. The 3rd October से आपको 3 महीने देखने हैं. Demand notice was issued on 10th October 2019, calling for submission of proof of payment of tax, interest and penalty, which is determined. Now, failure of which will result into initiation of the recovery proceedings under section 79. Now, against this letter which has been received, the petitioner went for the High Court. Then, since the communication was issued on 21st of October 2019 by the officer, saying that recovery proceeding has been deferred as per section 78 and will be initiated within 3 months of the assessment order of, on failure to pay, the revenue itself has chosen to defer the recovery proceeding, and therefore the matter will not be holding good. The petition itself is becoming infructuous, and therefore उसको जो रेट है उसको क्लोज कर दिया गया. That is section 78. Friends, today the another thing that I would like to cover here is the announcement of the case law series. So I will be requesting the team to please show us that case law series document. Friends, we are stopping today at this section 78 discussion. From tomorrow we'll be discussing section 79 onwards to section 84, and if the time will permit, we'll take the next section.
also. Friends, this is in front of you. This we are announcing, and the registrations will be started today. The seats are only 100 that we are starting with, and it is first come first serve basis. The only thing that I would like to share here is that it is not merely analysis of case laws. It is much beyond that, because with the analysis of case laws, we are going to also analyze the provisions which are applicable of the allied laws and if referred in the judgments. Plus, we are also going to refer the judgments which are referred or which are quoted in that particular judgment. कोई भी एक जजमेंट है, चाहे वो लेट्स से आपका इंटरेस्ट का जजमेंट जो अभी आया मद्रास हाई कोर्ट का या झारखंड हाई कोर्ट का वो हो, या जो आज हमने कमर्शियल स्टील का देखा वो हो, या फिर आप एंड कंपनी का जजमेंट हो, एनी जजमेंट उसका बेस फैक्ट्स, उसके डिसीजन, उसके क्या लॉजिक, वो डिसीजन क्रिटिकली एनालिसिस करके, प्लस उसमें कौन कौन सी रेफरेंसेस दिए गए थे, किसी लेट से अरेस्ट का है तो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट को अगर रेफर किया या सीपीसी को रेफर किया या एविडेंस एक्ट को रेफर किया है, तो वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू दोस allied laws. So that is the intention of this workshop. It will have 10 sessions plus 2 additional sessions. तो 12 sessions में हम इसको cover करेंगे, and we are starting on 4th of May 2020. So if anybody is interested, the links will be shared in the Telegram group and also individually to the participants. The PTM and the other details are already mentioned in this, and the details will be, and this sheet will be circulated to all of you after this session. So friends, this was the announcement which I wanted to make today, and from 4th May we are starting. The timings will be announced depending on the lockdown situation on 3rd May. So we'll be announcing the timing on 2nd May or 3rd May, and then accordingly from 4th we'll be starting the entire series. And this series is going to be in-depth analysis of the case laws, and we are intending to cover at least 50 cases which are relevant in GST or which are pertaining to GST decisions, also the decisions which may have some precedences even after the implementation of GST law. So friends, this is the announcement which I wanted to make, and let us stop for the day. I'm really thankful to each one of you for giving me this patience layering and being with me for this long journey of 31 days. Today we have completed 15 days of our this course, and it was a wonderful journey till date. So I'm really thankful, and I'm hopeful that we are able to make some value addition to your knowledge of GST. Once again, thanks to each one of you. Thank you, friends. Thanks a lot.